Hello, everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. Before I start with a very new and interesting topic in this video, don't forget to subscribe to our YouTube channel of iExamB exclusively, that is Legal Bee, for all legal exam preparation, content, notifications, recent updates, and also you can visit our website www.iexamb.com for more details relating to all exam courses available. You can write to us at hello@iexamb.com and also call on this number and get all the details that you require. In this video today I'm going to discuss with you all a very interesting topic जो काफ़ी discussion में है आजकल. A recent change in the legal history, I would say. I would specifically use the word legal history because it is an initiative by the judiciary that has been welcomed. The Honorable Supreme Court of India has made its proceedings live. That is, live streaming of proceedings of the Supreme Court of India. We all have heard about this hot topic, and I think many of you must have also witnessed this on YouTube. Also, everywhere you must have heard about this. So what is this live streaming exactly and what are the benefits of this? इस बारे में मैं आप लोगों से एक शॉर्ट वीडियो स्पैन में ये डिस्कस करने वाली हूँ. शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बेसिकली ये डिस्कस करूँगी कि एक्चुअली ये होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है. Why this step has been taken and how it is the response to this particular initiative of the judiciary. So पहले समझते हैं लाइव स्ट्रीमिंग है क्या. What is live streaming? Everybody knows the word live. जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में बात कर रही हूँ, that is something which I have already recorded. But you must have joined some of the other live sessions on YouTube. हमारे iExamB के भी सेशंस आपने देखे होंगे या फिर कोई भी और चैनल पर आप लाइव ज्वाइन हुए होंगे, आप इंस्टाग्राम पर लाइव ज्वाइन हुए होंगे एंड सो ऑन. दैट इज़ व्हाट इज़ व्हेन यू आर लाइव ज्वाइनिंग समवेयर एंड समथिंग इज बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव on social media. So that has been used in a very good way by our judiciary. That was done this year, 20th of September. What was decided? The full court, that means the Supreme Court of India full bench, decided that live streaming of proceedings of at least the constitution benches should be done. कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो बैठती हैं सुप्रीम कोर्ट में, these are basically dealing with matters which are highly related to public interest and general interest of the public at large is being discussed and affected by that matter. So everybody actually has a right to know about it. So court has taken an initiative and thereafter 27 September से 3 constitution benches कोर्ट रूम नंबर 1, 2 and 3 में सुप्रीम कोर्ट में they obviously sat simultaneously at their regular court timings, but the only change, which is a very significant change, was that it was live streamed through Supreme Court's webcast and also through YouTube. So it is easily visible and everybody could actually witness these proceedings of the constitution benches in 3 court rooms. So this is something which is live streaming. Court proceedings को simply live किया जा रहा है and everywhere anybody across the world, not only India but also across the world, is able to witness it. So and also we got a very good response on it. 8 lakh viewers around थे that were watching it on the very first day, more than 8 lakh. So it is of course a very good response. That means people are very much interested and ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ओपन कोर्ट सिस्टम इज एक्चुअली नॉट न्यू टू इंडिया. दिस इज अनदर पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू ओवर हियर. लाइव स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही न्यू है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज कमिंग और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समथिंग विच इज़ ओपन कोर्ट सिस्टम. हमारे जो भी कोर्ट्स हैं, आप कभी भी कोई भी प्रोसीडिंग को जाकर लाइव विटनेस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपका मैटर हो बोर्ड पे या आप उसमें पार्टी हो या लॉयर हो तो ही आप कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग देख सकते हो. ऐसा नहीं है. जजमेंट्स आर प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट्स. अगर आप लॉ से रिलेटेड हैं तो आपने ये
चीज़ विटनेस की होगी, that many times this word is mentioned that judgment has to be pronounced in open court. So this open court system is something which is not new to India, and this was also discussed on recently on 26th of September 2018, Supreme Court only, इन स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. इस पर्टिकुलर केस में allowed the Supreme Court case proceedings of constitutional importance that are having an impact on the public at large or a large number of people, that should be live streamed in a manner that is easily accessible for public viewing. So इस केस में 2018 में ये डिसीजन भी आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस के जो मैटर्स हैं वो लाइव स्ट्रीम होने ही चाहिए. एंड ऑफ कोर्स वी आर स्टेइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इस पर एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है. सो ये जो मूव है लाइव स्ट्रीमिंग का, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द फेथ ऑफ पब्लिक इन द जुडिशरी. वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन आवर कंट्री. ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन अ सेपरेट आर्टिकल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसको और स्ट्रेंथन किया गया है इस मूव से, एंड एवरीबडी हैज़ वेलकम्ड इट. This is actually promoting transparency, accountability and good governance. These terms are having their own meanings, but general parlance में अगर आप इस वीडियो के point of view से समझ ले तो उतना भी काफ़ी है. Anybody who is watching this video, not only law students, researchers, any general person who just wants some knowledge about what is live streaming, can know that being transparent, everybody knows what is being transparent. Maintaining transparency, maintaining everything is transparent, everything is crystal clear in a democratic country. The functioning of the government has to be crystal clear, known by everybody. Accountability should be there. People should have, everything should be reasoned, every action should be reasoned, and good governance of course requires all these things. Now let us look at some other angle. Of course, when you are talking about certain matters in the court, it is not only one matter or two matter, but there are many types of matters that are discussed in courts. तो अगर generally अगर हम इस टॉपिक को देखें तो some matters need to be excluded from live streaming, and ये होगा फॉलो. ऐसा नहीं है कि मैटर्स को लाइव स्ट्रीम कर दिया गया है. तो कुछ कैटेगरी ऑफ मैटर्स हैं वो भी हम समझ लेते हैं जिन्हें लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा. इन कैमरा ट्रायल्स, सबको पता होगा व्हाट इज इन कैमरा ट्रायल. इन कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग्स don't take place in open court. Okay, they don't take place in open court even जब कोर्ट में जो हमारा फिजिकल कोर्ट चालू होता है, at that time also the door of the court is closed and only the particular person who is the party to the proceeding, जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है in that trial, and the magistrate is present there. सो ये इन कैमरा ट्रायल का जो प्रोसीडिंग है ये ऑफकोर्स लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा. मैट्रिमोनियल मैटर्स को बाहर रखा जाएगा. चाइल्ड अडॉप्शन एंड कस्टडी रिलेटेड मैटर्स हो गए. सेक्शुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, इस तरीके की कैटेगरी के जो ऑफेंसेस हैं, जो मैटर्स हैं सिविल क्रिमिनल, दैट ऑफकोर्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम लाइव स्ट्रीमिंग. Now, what are the benefits of this? Let us quickly understand that. Any member of the society can be acquainted with the proceedings of court. Especially, special focus will be on the public interest decisions. कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग, आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है, सबके पास टीवी तो होता ही है. कोई भी स्मार्ट टीवी से, स्मार्टफोन से ईजीली एक्सेस कर सकता है. सोसाइटी के लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी डायरेक्टली विटनेसिंग द प्रोसीडिंग्स. सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ कोर्स इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. ये हम लोगों ने पढ़ा है. अगर आप लोग
लॉ पढ़ चुके हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर आइडिया होगा. दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम द लॉ डिसिप्लिन स्पेसिफिकली दैट ignorance of law is not an excuse. This is what is the basic principle. So knowing law is of course a very benefit for any person in the society. Next very important पॉइंट इज सेवियर फ्रॉम मीडिया ट्रायल्स. अब मीडिया ट्रायल्स एक अपने आप में ही रिसर्च का टॉपिक है, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट मीडिया ट्रायल्स इज समथिंग विच इज़ बीइंग डन बाय मीडिया. मीडिया इज fourth pillar of democracy indeed, but many a times there have been conflicting issues that have taken place, and honorable apex court has also observed in many cases that media and the judiciary are institutions which are separate. They are having separate spheres and functions. Their functions are not overlapping in any way. किसी भी तरीके से overlap नहीं हो रहे हैं, and they are not going to discharge each other's functions. बट मीडिया क्या करती है, मीडिया कई बार जब प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस करती है पब्लिक के साथ उनके चैनल्स पर, सो दे आर ट्राइंग टू एंगेज इन एक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म, नो डाउट, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स देमसेल्फ एंड ऑल्सो कंडक्ट द ट्रायल एंड द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल विच इज़ द जॉब ऑफ द जुडिशरी. सो ये मीडिया ट्रायल्स का जो कंसेप्ट है यहाँ पर डिस्कस किया गया है. दैट इज़ वाई कोर्ट हैज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन दिस, and court has only said that media should engage only in acts of journalism and not act as a special agency of the court. So ये सब चीज़ों पर भी काफ़ी ये लाइव स्ट्रीमिंग के वजह से it will be a direct evidence based streaming which is being done directly from the court proceedings live. So इसमें काफ़ी सारा biasness we can say shed हो जाएगा. So that is another very very good benefit I would say. Lawyers, law students, academicians, researchers, they will be benefited a lot. जो लोग litigation में जा रहे हैं या सालों साल अच्छे अच्छे lawyers को देखने के लिए wait कर रहे हैं, they think that they need to travel to Delhi, they can directly sit at their comfort places anywhere and watch these proceedings and observe and learn so much. So this has become very easy now for law students and lawyers, especially young lawyers, and researchers, academicians of course have a very good scope by this particular exercise. This is a very good democratic initiative by the Honorable Court, and we all need to welcome this initiative. So this was all I had to share with you all about live streaming. Stay tuned for more such kind of videos at LegalB. We are the expert faculty at iExamB. I myself, Amrita Johar, Miss Neha Dubey and Miss Vidika Bansal. You can write to us in the comment section of these videos as well. आपके ऐसे कोई भी queries हो, आपको किसी topic पर doubt है तो आप मुझे लिख सकते हो. We will definitely try to bring a video on that particular point. And also don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster if you're preparing for any exam with iExamB. Thank you so much.